Hello guys, am I audible? Let me know in the chat section. Hello, guys, can you do one thing for me? Can you put the reminder on the group, like WhatsApp group you are in for the project session? Like the class has been started. Please join in quickly because I think I'm not the admin of that group. Mm, is okay. Just Anil, just fastly send in the message in the chat so that everyone knows. Like we are having project session here. In the meantime, let's start, guys. Okay. So I'm sharing my screen. Let me know when my screen is visible to you. Okay. Hello. Is my screen visible? Mm. Anil, have you dropped it in the message in the chat? Anil, can you let me know if you have dropped the message or not? Okay, you have dropped in the message. Share the link also. I don't see myself in the group. Okay. As Anil has shared the group, like message in the group, so we should not delay more and like try to continue from where we left. Okay. Okay. Okay, so guys, let's just start from where we left. Okay. Okay, let me open the open board so that okay. Okay, guys. Till this point, we had a screen
background color, borders. But in this map generator, we want to generate the bricks. Okay. So we, until this point, we have established that we need a map data structure. Okay. And in the map, I will store the value 1 against all the things. Okay. Then how can I find the width and the height? Basically total upon my number of columns and for this number of rows. Okay. So I can get the width of a specific brick. Okay. We have achieved this till this point. Now we are going to make the bricks. Okay. And we know that that for drawing something we need a draw function, and like in this we need 2D because the rectangles bricks are in 2D nature. Okay. Guys, if anyone has any doubts till this point, let me know, or like I should continue forward. Guys, let me know if you're not responding, I am unable to know. Okay. uh, think of it like as in a matrix. Okay. We have all studied the matrix now. This is a matrix, so it has to be a 2D thing. Okay. So like, I think everyone is okay, so let's draw the bricks. Wait a second. Uh, okay, now it's fine. Okay, now public void draw. Okay, now it got imported, as you can see. Okay, so let's begin. Okay, we will get through this, so just let me type it out first so that we can meditate on it for. G dot set color. First I will write it out and like we will discuss it thoroughly. G star.
brick width, brick height. Okay. G dot set color. Okay. G dot. Okay. We will discuss it thoroughly. Just stay with me. I can provide you code in Dianet, but like I prefer uh, to code it in front of you. Width. Here should be brick height. Okay. Okay. Now we have to make a function to set the brick values. So this is it for map class, I think. Yeah. So let's guys discuss now. Okay, let us discuss. I have done. So here I have formed a matrix and put it with a one like everywhere. Okay. Now I got a matrix now, and everywhere there is a one stored. Okay. Point to remember. This is just to calculate how much width is of a single cell. One single brick width and one single brick height. Okay, these are the two things that are calculated. Now what I'm doing is wherever there is a value greater than 0, so here comes our logic. If I hit a brick, it's no longer a value 1. Okay, so it's become 0 and 0 cannot be greater than 0. So for that it automatically does not draw anything. Okay, that's the logic we have putting behind.
Now if it is 1, basically in every case at the start it is 1. So what I'm doing, I am coloring the brick of the red color, and this is the formula for filling in a single brick. Okay, for single brick I have to multiply it with j. So basically ing is 0 at the first position, 0 0. Okay, and it will, the coordinate will be 0 plus 80 80 and 50 for the first, and these are the parameter that are by default. Okay, that are calculated by this. Okay, now as I keep on moving forward, ing will keep on increasing and the bricks will keep on moving forward. Okay, so this is for like uh, specifying the dimensions of the bricks. Get stroke is nothing but like at the brick, at the border I need little bit of highlighting so that I can distinguish between the bricks. So this is for that, and the distinguished line between the red will be black. And I have to, like I have made it so for Java, in like Swing you have to use two things together. Like if I made something, like I have made this border stroke with the color black, so I have made it. Now I have to fill everything out. So for filling I use draw rectangle. Now I am filling it out. Okay, so this, now the bricks will keep on adding and the stroke will be keeping on adding. Okay, this is of black and this is of red. Okay, and the value is calculated so that I can use it in logic function. Guys, let me know in the chat if the map generator function is okay, because it's completed now. Line 36. So this is nothing but filling up the brick with the red color. Okay. Okay. So dimensions पे मत जाओ. Like basically पता क्या है ये, sorry, don't go to the dimensions thing, these things plus, because this is different for everyone. I have taken a single brick as like for example 540. Like I want to make 7 to 3 na. So columns are 7 and rows are 3. So for one brick, this comes out to be 80 and this comes out to be 50. So this is what I am adding here, because I single brick length, single brick width is 80. So this is 80, I know, and height is 50. This I know because I have calculated this, and I know there are 21 bricks, so 7 columns and this many rows. Okay, so I have calculated this 80 and 50 as you can see here. Okay, so this has to be added every time in order to maintain the spaces between the bricks. How can I know this brick is different from this brick? So I add this much space, 80 space and 50 height to every bit. So because if the new is added, it should be 80 apart. Are you guys good now? Let me know in the chat whoever had the questions about these dimensions. Are you clear now? Umair and Shamshad and like others, are you getting how is this calculated or not? Let me know again. Guys, respond in the chat yes and no. Like there are only two answers to a question. Okay. So these things you have to manipulate by yourself. Okay. So like we understand the logic behind. So I have to explain once again. Like some people are saying. So I know there are 21 bricks as I have set it as default. Okay. So this is the brick formula: column and rows. Okay. So single brick width is 80. Okay. And single brick height is 50. So keep that in mind. This is 80, this is 50. So if I have to arrange a new brick in the line, two bricks must have a 80 distance apart and 50 distance apart of height. So I am adding these things and j will keep on increasing. First it will be 0 0, then 0 1. So I will keep on adding my bricks, and like the distance will be separated by this 1850 as by default. Okay, I think everyone is good.
Okay. Can you guys give a yes for like if that is clear now? Like someone said no. Okay, Ankita and someone. Okay, okay. So at this point, we have let's see what we have established. Okay, we have established borders that are yellow colored. We have established our score that is of white color. We have established a ledge, a bowl, and now we have also established brick in our system. Now we have everything we require, but like this is in static manner. Okay, we want to play the game, so it should be dynamic. Now we had to add what event listeners. Okay, I have to add event listeners are nothing but like the functions which calls themselves whenever a specific event happens. Okay. So for example, a event can be when I press right key, this should move right. Whenever I press a left key, this should move left. These are the events, guys. Whenever ball struck this is an event. Whenever ball struck this, something should happen. So we will be working on that part now. Okay, let me see one chat is there. Okay. What is an event? Mohammed Umair, are you now? Do you understand the event? Events are nothing, but like if I press the right key, that's an event. Why is this that an event? This should move right whenever I press the right key. This is an event, guys. Whenever I press the left key, this should move right. When our ball falls on this is an event. Something should happen. Ball should bounce back. Whenever it hits a border, it's an event. So how do I know ball is hitting this wall? How do I know? I will implement a key listener here. Listener listens for the events and action listener, sorry, action key listener and action initiates an action. Whenever key listeners says something to the action listener, as the name specifies, it provides some action. Okay, so key and action listeners are always used in pairs. Is this okay to you guys? So we have understanding the basic logic behind. Okay, so now we have to implement it. Okay, so map generator is fully done. So let's go to the gameplay now. Okay, what we have here. So first of all, let us complete this work here, the map generator work that was uh, left. So let's add event listener to the gameplay. Okay, because we require the event listeners. So event listeners, there are 4 event listeners like key, action, action performed, action listened. So I will list out all of them. So for that we have to write. So what was delay part again? Delay part is Vivek, when the game stops, I win or like I lose. So there must be a delay when we start a new game. Now the logic will come in downwards direction, but like at start I've kept it as 8. Okay, it will come to you. So let me do this. Okay. Implements key listeners and action listeners. Okay, so let us click on that.
and import everything it requires. So when I click on implement all the abstract method, you can see automatically by default these four things are written in my code. So whenever I import a key listener and action listener together, I get key typed. So basically there can be only two types of event, as we can see. Wait. Key listener and action listener. Okay. So in key, there can be a key typed. Okay, I type a key or press a key. There can be two types of event in keys, and it can be also key released. Okay, I can hear these things, and only action performed. Okay, so these are the four default listeners we have, and it get automatically initiated in our system whenever I import them. Okay, so whenever I import key listener, action listener, these things come in place. I think this error will be gone now. So this error is also gone now. Why? Because I have extended to JPanel. Okay. Okay, all the errors are gone. Okay, guys. So are you guys did you guys understand it? First, let me know. Are you guys understand it? Like we implemented a key listeners. What are the role of key listeners? And what we are going to do from now on? Are you guys comfortable till this point? Apart from Shraddha, if everyone like everyone typed, it will be helpful. Like it will be 50-70 unless you do it yourself. Like you can understand all the things, but like once you get to do it yourself, you will get the confidence boost, and like it will be from 60 to 90. Like nothing is like but like if you are stuck somewhere, like you are not unable to grasp something specific, you can always point out. Okay, key pressed and key type. So key pressed and key type, like I can also type in the key without pressing the key using the on-screen keyboard by using the mouse only. Asif. And extend part, this extend, okay. So as I told you, there are JFrame and JPanels. So gameplay extends, it's a panel, okay. And whenever I import something to main, I have imported this gameplay to main and added it. I added object in the main object. I have added this gameplay, so I have to make a JPanel out of it now. Okay, so it's a part of JPanel. Okay, you have to do it whenever you implement something in main. You have to extend it with the JPanel. Are you guys okay with the doubts now? So be like ask doubts and like respond in the chat because like I wanted key listener and actual reference are interfaces. Yeah. So whenever like there are two listeners only, key listener and action listener. Whenever you implement it in your function, like the most common one will be dictated to you. So you just have to write the code now. Okay, that is an inbuilt function. They are implemented here. Okay. Can I move forward now, guys? Guys, please type in yes, and like if we can move forward or not. So now we will be writing the logical part. Okay. So only like 5-6 people are responding, guys. Kindly respond, guys. If you guys are not respond, like will not respond, this session will become boring. Like we should do study with the fun, guys.
Okay, Mohammed, I will see that in the doubt session. Like implements will be like just do it like I have done, and like you will not get error. So don't focus on your code now because you will get the GitHub link. Just focus on the things I am like telling you because we will do that. Like code is not that difficult. If you understand everything, like you can paste the code here because and nobody wants you to code this. Okay. So now in the gameplay map generator, I have to add listener. Okay. So what I have done here is I have put a listener on timer. So whenever I click somewhere, the timer should start. So the match timer will start. Whenever I start a game, how to start a game? Click, and the timer will start. So timer pick. I have put a listener on timer so that I can calculate the time. Okay. Okay. This is done. I have painted. Okay. We are done till here. So now we will write the logic. Now I'm writing the cases when the ball gets out of bounds. Okay. Font is set. Draw string. Wait a second. Okay, explain the code along with writing. Shamshad, like that will become a little bit hectic for all because like I follow the approach key. I write 12, 15, 20 lines so that there is something to explain, like so that we can have a chat for 5 or 10 minutes. Like if I write the 4 or 5 lines and explain it, so it does not seem to have a conversation we can have.
I know it seems a little boring when I write the code part for all of you, but like I will discuss in every 5 minutes, so it will not get that much. Like I can explain it long. So I'm writing the case for like when the string goes out of bounds. Okay. Like if you want key, we should explain along, so that can also work for me. I don't have an issue. But like I prefer to cover some part, and like we can discuss the whole part then, because just copy this. Then control Z, control. What happened now? अभी रन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रन हो जाएगा। रन की प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम अभी भी अपनी मशीन में करोगे तो रन हो जाएगा, रन करने का प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर तुम रन करके देख लेना, क्योंकि मेरे में थोड़ा कंपाइलर इशू है शायद जावा में, तो मेरे में तो इस तरह से नहीं होगा। पर लाइक ये कोड वर्किंग है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कराया था, गिटहब पे अपलोड था मेरे, तो ये वर्किंग है, तो उसका इशू नहीं आएगा। आप अभी रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके में, क्योंकि मेरे सिस्टम थोड़ा स्लो है। तो अभी आज तो मेरे को लग रहा है कि we will try, but like आप अपने में भी run, like you can try like run in your machine, it will run fine. I don't have an issue, I know this code works fine. Okay. Okay. Let me write a little bit more so that we can discuss for 10 minutes straight. If on total, place equal to false, x direction equal to -2, ball y direction equal to -1. Ready रहने देते हैं, and copy this and paste this here, bold 30, but in this time okay. So now guys, let's discuss what we have till now. Okay, now as I've discussed, I am covering the cases from here on. When will the game stop? Okay guys, so as we can see, whenever the ball position is greater than 570, what does this mean? So we had a limit here. Okay guys, so whenever the ball crosses that limit,
what will happen? The play will stop. The ball direction where it will ball will stop. Ball will stop. Okay. The color will be red, and now I have to send a message on the screen. What will the message? Press over the score, and the score will be. So first of all, what will happen if the game becomes over? The score should come on the screen. This is your score, whatever it was. And then after that, after delay that I have set it timer, there should come a message: press enter to start. Okay, so this is the case for that. What if I won the game? What if I won the game? What if I won the game? If I go won the game, the same thing will happen. The play will stop. But in that case, the ball will be set it to original position, wherever it was. Okay. A message will be represented game over. Okay. And after that, the same message will come enter to restart. Are you guys comfortable with whatever I have discussed now? Let me know in the chat. The chat is opened. Huh? Ball position X. We have taken that. Why this is here now? So ball direction, ball position is this now. Because we when will the game over? X axis पे game over नहीं हो सकता. It should be a downward on the Y axis only ना. X axis पे तो ball will continue to bounce back. Yeah. Are you guys? So now after that, I have to dispose the whole thing. The thing I have maken here, I have to dispose it again, and it will make again. The paint function will work again. So everything will keep on loop. And any more things to ask? Dispose means the whole thing will be removed and bring back again, because when the game is over, it can happen like there are 10 bricks left only, but like I have to make sure not the whole things comes back again. The speed of balls is like something it goes as it is, so we can't change that. I think it is static, or it remains same, you can say. 72 and 73. Okay, whenever the ball like, okay, so let me give you a scenario. So if the ball reaches till here, so at this point there is no direction of the ball will disappear. Okay, okay, so ball will disappear, so the directions of the ball are basically 0 and 0, unknown to me. Okay, should we move forward, or if you have more questions, kindly put it out. It's the default I have taken. I have set it to the default. Nothing, I have done nothing. Just set it to the default. Okay. Should we move forward, guys? Just give me 10 yeses, so like I can move forward and know everyone is following up.
No. You don't get question on codes. Minor projects are just for like a resume, showing, we can say, a showmanship. Like it's like you, like projects are like some companies ask them, some companies don't ask them. Okay, it's like Schrodinger's cat, dead or alive, we can't know unless we're in the interview. Where's the doubt session, Vivek? You will get informed about that. Okay, no laughs on the Schrodinger joke. Okay, I guess I'm not funny, guys. बंदा जो है वो आईआईटी का छोड़ा हुआ है. So let's write now. Action. Basically, we don't require these two things in our function. So let us cut that, and like let us put them here because I don't require these two things because these things are not used in my game. Like Shraddha, we can do that. It's not big of a deal. We can do that. Like question are most of the time the questions are asked from major project only. Like we can do that also. On the action performed function for now. Okay, so okay. If play started, what's the issue here? Unreachable statement. Why unreachable? Okay. So guys, now I will write the logic for reflections and like the score. How does the score increase? So be with me and like let me write something and like we can discuss that out. If I will keep on chanting things I'm doing. So now I am doing the reflection thing. So how can I know like my ball is hitting on something? So I have to check the intersects, the math functions here. So there are two rectangles. I have to see if they are intersects or not. Layer X is a ledge, the thing which ball will be hitted. Okay. Let me see what is okay. Let me import it. Let me divide the whole thing into portions so that I can run it again. Okay.
Okay, now I'm checking for the bricks. Whenever I hit a brick, what to do? Above one was when the ball was hitting the ledge. This one is ball hitting the brick. Mhm. Tangle. My hand is tired. What? Mhm. I have to make changes here again, I think. Just first let me.
Let me write a little bit of logic so that the whole thing should be cleared out. I think I have to write uh, for the reflection thing also, so that we can discuss the whole thing. I will be like I will debug the I think so. Forget it for a little bit. Break correct dot x plus width. My forums. Ball x direction. Then if this happens, then else ball y direction. Okay, this is done. Like I have to do this map again because this one was first with the help of I iterative loop, and then it suggested me to do with okay. Now okay, now it's good. Mm, mm, mm.
Guys, let's see what we have done here. Guys, hello. In the chat, are you still awake or like did you slept during this? Okay, everyone, guys, good morning. Wake up. Can we start? Just ping yes or no. Like, can we start? Okay, I'm just paying attention. Okay. So for this, let us see for this only. So this is when ball hits the hedge. So only simple thing happening. What I'm doing, how can I know two things are colliding? So I draw a rectangle around the ball. This is a rectangle, and I will know whenever these intersects. Okay. So what I did, I form a rectangle around the ball. I formed a rectangle around the hedge and dot intersect and see if they intersected at any point, because I have 4 coordinates for this, 4 for this. I should know when they are intersecting. So I did a simple thing. I changed the y direction of the ball. Okay. That's what hedge is doing now. If a ball is colliding on it, it is changing its y position always. It will not set it plane, or like does not set it this way. It will set it into the y direction only, hedge. Okay, let me see the chat. Okay, now guys, let me know in the chat if the ball colliding with hedge is clear. हेलो हेलो Hello, yeah. हाँ मतलब Hello, अगर hello. वो रेक्टेंगल उसके मतलब बाउंड्री पे बना रहे हो तो उसका शेप चेंज नहीं होगा मतलब जैसे नहीं बॉल पर के हाँ, वो क्या ठीक है, पर रेक्टेंगल उसी कोऑर्डिनेट से बना रहे हैं ना, जैसे देखो समझो ये बॉल है, तो बिल्कुल इस पे, क्योंकि जो वो अपना ओवल होता है वो रेक्टेंगल में कंप्लीटली अच्छा समझ हो सकता है ना। अच्छा मतलब दिखेगा नहीं क्या मतलब दिखेगा नहीं मतलब केवल होगा उसके आसपास नहीं, मतलब उस दिखेगा नहीं, वो हमें ओवरलैप हमें करेगा बस ओवरलैप इंटरसेक्ट करेगा के लिए बना। हाँ हाँ, ओवरलैप करेगा ठीक वो हाँ, तब वो जब, क्योंकि हमें ओवल में नहीं पता चलेगा ना कहाँ पे क्या टच हो रहा है, तो रेक्टेंगल टू रेक्टेंगल हमें पता चल जाएगा कि कहीं पे भी ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब उस टाइम हमें डायरेक्शन चेंज कर देनी है बॉल की। ठीक समझे? ओके। ठीक ठीक नाउ इसके लिए थोड़ा मैप के थोड़ा मुश्किल है, मतलब उसके ब्रिक के लिए, पर एक लाइन बाय लाइन चलेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये मैप के लिए तो पहले हमने क्या किया, हर ब्रिक को, जैसे कि हमने वहां पे किया था, अगर 0 से बड़ा है तो हर ब्रिक का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, सेम थिंग है वहां पे। बस हमने यहाँ पे मतलब हमें पता चलना चाहिए ना हमने किस ब्रिक को हिट किया है, तो ब्रिक एक्स एंड ब्रिक वाई में हमने स्टोर कर लिया कि कौन सी ब्रिक है ये। ओके, एंड देन उसके बाद क्या किया, ब्रिक एक्स एंड ब्रिक वाई सबके अराउंड एक रेक्टेंगल किया, एंड बॉल के अराउंड तो रेक्टेंगल है ही, तो हमने क्या किया, सबको बनाया पहले लाइन वाइज। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट ब्रिक डिड वी हिट, तो इसके अराउंड रेक्टेंगल्स बनाए, एंड बॉल के अराउंड है, तो whenever ball hits any of them I will know. How I know? I know by I and j values, because I and j are different for every brick. Okay, so what will I do when they collide? I subtract the total number of bricks, I increment my score, and I set the value to 0. Okay, and now what will I do? How to know if I have to change the x direction or y direction? If the ball position where the ball is plus 19 is less than brick rectangle into x, so basically if the last brick is remaining, so the ball will move into x direction. Okay, if the last brick is remaining this way, the ball move with the, so if the ball hits the corner bricks, it will go on the x, if this hits sideways. Okay, and all the other cases it will go minus y direction. And now let me know if anyone have anything to ask. Like I have explained everything quite sufficiently, I think. ये हेलो hello. हाँ ये मैप डॉट लेंथ मतलब ये 2 बार मैप आया है नहीं, पहले पिछली बार ही क्या था, जब हमने फंक्शन में निकाला था तो वो मैप हाँ डॉट लेंथ पिछली था। बार तो मैप ठीक है, मैट्रिक्स बनाया था तो हाँ, पर तो पिछली बारी वाले को कॉल करना और फिर उसके अंदर आइटरेट करना, क्योंकि इसमें तो हमें पिछले वाला नहीं मिल रहा ना, हमें पिछले वाले को बनाना भी है, फिर उसमें आइटरेट भी करना है। तो मतलब ये जो मैप है ये क्या मतलब वही रेक्टेंगल है
दूसरा मैप है मतलब। मैप जो हमने पीछे बनाया ना, हाँ उसी मैप का एक मैप है जिसमें हम आइटरेट करेंगे। अच्छा, मतलब ये सिंगल डायमेंशन है दूसरा मैप। कंपल्सरी था यहाँ पे बनाना है। हाँ हाँ तो ये 19 प्लस हाँ, किसकी है ये इसमें, ऐसे जो है। बॉल बॉक्स एक्स, ये +19 ये लिखता है हाँ। मैथमेटिकल है वो, मैं वही बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकल है, ये हर कोऑर्डिनेट के लिए अलग होगा। जो मैंने बनाया था उसके लिए कैलकुलेट ही हो रहा था। ये आपको में रन नहीं हो रहा, मतलब हो ठीक है रन ना? हो रहा है या फिर मतलब हैंग कर रहा है सिस्टम? नहीं, मेरा सिस्टम में दिक्कत होगी, हैंग हो जाता है कई बार, क्योंकि मैंने नहीं अभी होता चला के क्या है ना, देखा तो जैसे मेरे में मतलब जैसे कोड। हाँ, हाँ अगर जैसे साइड बाय साइड हाँ, एक बोलो बार बोलो। कोड रन होता रहता तो उससे पता चलता कि हाँ जो हम लोग नहीं नहीं, यूज वो कर तो रहे हैं ना ये सारी चीजें, तो समझ में आता ज्यादा। नहीं तो आप रन कर सकते हो मेरे साथ टाइप करके, सारा वर्क मैं भी करेगा। मैं मेरी इसमें बिल्कुल दिक्कत भी वही चेंज हो नहीं रही ना, करूंगा। मेरे में भी थोड़ी देर में वो हैंग हो जाता है, फिर वही सिस्टम रुक जाता है। फिर थोड़ी देर में जब अब जगता है तो फिर चालू करता हूँ लिखना। तो साइड बाय साइड में दिक्कत तो यही हो रही नहीं है, नहीं, पर इसमें भी मैं आपको हैंग हो बता रहा रहा हूँ है। कि ये बिल्कुल करेक्ट है कोई भी। हाँ हाँ, मैं मैं जब भी तो आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपको हर पॉइंट पे हर लाइन में बता पाऊँ हो क्या रहा है। वो नहीं मतलब नहीं जो तो जे आप फ्रेम और जो सेशंस में जो जाओगे तो आउटपुट सीधा में आता है ना, जो आउटपुट में हाँ आता है ना, हाँ वही मतलब वही नहीं हो रहा, वो तो हम्म, ब्लैंक दिखा रहा है, जबकि कोड पूरा लिख दिया फिर भी ब्लैंक का ब्लैंक ही बना है, तब से कुछ हो ही नहीं रहा। वही मतलब हैंग कर जाता है बीच तो वो बीच में आप बाद में हाँ हैंग सिस्टम कर में। जाता है। पर मैंने ये कोड मतलब पिछली बार भी करा था, और मैंने 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ मैं। तो ये कोड बिल्कुल ठीक है, आराम से रन करना, अभी आप समझ लो। ये ठीक। रन 100% हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं डाउट में बैठता हूँ रात को 11 से 1 आज भी बैठूंगा। किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आ जाना। मैं इस पे गारंटी लेता हूँ कोड वर्क करता है। ठीक ठीक ठीक। है। और हर पॉइंट पे हम समझते चल रहे हैं, आपको कोई किसी भी लाइन में डाउट हो तो पूछो। तो मैं तो बिल्कुल अंदर तक ट्राई करता हूँ, नहीं तो अभी तक ये खत्म हो जाता प्रोजेक्ट, अगर इसको बिना टाइप करे आपको सिर्फ समझाता ना ऊपर से, क्योंकि बाकी सभी वही करते हैं। ओके ओके श्रद्धा, कमेंट मैं गिटअप पे ऐड कर दूंगा। मैं आई जो गिटअप लिंक आई विल शेयर विद यू गाइस, आई विल ऐड द कमेंट्स आल्सो। ओके सो अब हमारा लाइक वी हैव ओनली वन केस लेफ्ट नाउ फॉर द borders. We have covered with the hedge, we have covered with the bricks, now we have to cover the borders. 2 3 4 ओके। This should be X. Guys, can you hold on a bit? I have a
This is quite like understandable. अगर जीरो से लाइक साइड में जा रहा है तो x को नेगेटिव x कर दो कि उसको वापस अंदर लाइक इट शुड बाउंस बैक इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्स and it should come back, and like if it is greater than the upper side, it should also always come back. So anyone having any doubts, these are the three border cases. I think this is quite understandable for everyone. Can you guys confirm in the chat if this is understandable? Yeah, we haven't moved our bar. We will write the code for moving the bar, but like that will be on key press because the bar is moved using the keyboard now. So it comes under the key pressed events. Okay. How can you use the mouse to move the bar to left and right? But if you want to, you can use the key press too, because mouse event listener can be also used in key pressed. Okay. So let's write the code then. Move right function I will write down, but like until I've not written the move right, we should move forward. I will write it down. So after pressing enter, I am restoring everything to the default position they were before. And it's now okay.
Seeing the chat, yeah. What type of question do you expect from this project? Okay. In this project, you will not be asked much of things, but like recruiter can ask you what you have done, so you have to explain it. So he will not ask you the question from the code or something. You just have to explain it in a way that he can understand everything he wants to know. He wants to know just he just wants to know uh, you have made this project, and like you should explain in a good way so that he gets the impression you know all of it. So impression is important. Okay, I think that answers your question. Oh, I think I missed something. Oh, I missed something between, but like let me do the remaining things. Repaint. When I press enter, these things will happen. When I press right, these things will happen. Let us discuss it in detail. Just wait. Okay, let go. Public void. Move. Right. Okay. So, like you are watching the project being done, but like you will do it yourself after the session, now. You will see the code and remember everything. So you just, Mohammed Shamshad, you just have to explain this, that I have done this project using Java Swing. Name some libraries like color, AWT graphics, graphics 2D. I have made a bricks using graphics library, and like I moved my the wedge right by using listeners, event listeners, and the board reflection is covered by the cases of event listeners that I implemented. So this is the explanation. If you give the interviewer, he is happy about it. He does not want to know what the code have you written, what all the functions have you returned, how have you implemented it. Okay. I think a class is left. Yeah. Let me copy this. No. Left. So let us discuss the significance of. So if the right key is pressed,
So I have to make sure the badge does not go out of bounds. So it can happen and I am keeping on pressing the right thing and it goes out of boundaries. So that should not happen. So the boundary is in between 600. So it should not exist 600. If it exists, sorry, I do not have drinking something. So basically this is 600. So I am making sure if this goes out of 600 thing, it again comes at 600. So it cannot go beyond this point. So this line is making sure that, and else I have to move right. If I'm not reached till 600 and someone keeps on pressing, it will keep on going until this point. Okay. Same for left. Okay. Let us see what move left and move right have function have. So if the play is true, the game has started. I just whenever I press right, the player will move positive of 20. So this is player. This will move positive 20. Basically, this side on the right and this side on the left minus 20. Okay. And by pressing enter, I am starting my game and like so everything should be of default. So as we were seeing, we were like disposing the thing there. So I am repeating in the enter because whenever the game starts, I have to press enter to start it. And whenever I press enter, the thing will be repented. Okay, that thing I disposed will be repented. The project is finished. If anyone has to ask anything, let me know at this point. 152, why is 670 or length is 700? Okay, because the borders are taking the like 10 spaces na both side. So border has a width too. So I have to consider that, Vivek. Okay. There is also border width on the both sides. Okay. Let me see where. 152. Uh, 186. Okay. So whenever I press a key in my keyboard, if that equal to enter, okay. So I have to do these things. That get key code does nothing but like whenever I press a key, it gives the value to get key code, and I have to check if that equal to enter or not. VK left will give me the left. So it has stored a left value of the key in it. Okay. And key code get me the value I press. So if they both are equal, means left is pressed now. So that's what it means. Line 186 means this. And like these are the default values, like -2. The thing, it's default. These are default as per the start. Okay, as per the start, because the thing will be repeated again. Okay. Now I think everyone doubt is settled. So what will I do? I will provide the GitHub links for all the code, and like before sleeping, I will make sure I have a class 2 from 11 to 1. So at like 2 or 3, I will make sure I put the comments in for the logics also in the code, and like that will be fine for everything, I think. Like we have not taken any breaks in the 2 hour previous 2 hour section and this session, so I think I should turn this off now and like eat something if everyone is satisfied and like we have done everything. Okay guys, when we have done bit by bit, so I think everyone's good. Second project I will reveal tomorrow. I will not let you know before. Okay, so thank you guys for maintaining the decorum. Yeah, Anil, the code will be sent. So don't worry about the codes. You will get the. So let me copy the GitHub right now and paste it in the chat. I'm stopping sharing. See my pretty face meanwhile. Like just kidding, guys.
Meanwhile, I'm trying to share the GitHub links. You can see my pretty face, and I'm sure it's not that prettier than yours, but like I think it's average thing. Just wait 1 second. I'm sharing the code. It stopped working. My PC. Just wait, like it's closing something. It was not responding. So yeah, it's closed it. Hello. Yeah, I've shared the link in the chat. Output will be a screen, and like our bricks will be of red color, and there will be a ball, and there will be a ledge, and like when you press the right and left keys, the game will start. Okay, so right will move right and left will move left. So you have to run the main file. You have to run the main file, guys, and the game will begin. Don't run any other file, just run the main file. Just put it all in a single thing from the GitHub, and then run the main file, and everything will work. Okay, as it is. हेलो. Okay, hello, yeah. हाँ, मैं पूछ रहा जैसे जो हम लोग ने अभी इसमें जो भी GUI वाला काम किया, हाँ जो भी ग्राफिक्स वगैरह, तो हाँ। जो वो एक बंदे ने बताया था कि उसमें शायद वो कॉपी पेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो फंक्शनैलिटी होती है वो NetBeans उसमें में. वो ऐसे वो क्या होता है, उसमें हम अपना GUI बनाते हैं एंड फिर उस पे कोड लिखते हैं। पर हमने क्या किया, हमने कोड बनाया है जिससे GUI बनाया है। उल्टा भी कर सकते हैं, पहले GUI बनाएंगे फिर उस GUI के हिसाब से कोड लिखेंगे। पर हमने यहाँ पे अच्छा, क्या कोड किया फिर है, भी लिखना पड़ेगा. हमने हाँ कोड फिर भी लिखना अच्छा, पड़ेगा, मेरे को लगा डायरेक्ट क्योंकि बना उसमें सकते हैं उसको. नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ स्क्रीन बना सकते हो पर स्क्रीन की फंक्शनलिटीज नहीं बना सकते ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक. ठीक है, ओके। सो गाइस, हैव अ गुड नाइट. See the code from here and like it will work. Okay, thank you for joining in. I hope the session was good. So can we guys give me a thumbs up so that we can log off, or like yes, so that okay. सर नेक्स्ट लेक्चर कब होगा फिर से? नेक्स्ट कल ही होगा। कल, ठीक है। ये शेड्यूल ऐसा है, देखो आज एक माइनर हुआ है, कल भी एक माइनर प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट वीक क्या होगा, हम एक बड़े मेजर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हम SQL भी यूज करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी स्क्रीन्स बनाएंगे एंड दैट विल बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। ओके ओके सर। और सर जो नॉन IT के जो स्टूडेंट हैं उनको इतना समझ में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं यार, वो कुछ बात नहीं, देखो प्रोजेक्ट्स में इतना ही समझना होता है, इतना तुम समझा पाओ। अब तुम्हें प्रोजेक्ट्स में ही नहीं होता कि तुम्हें सारी लाइंस का मतलब पता हो, बस तुम्हें अगले जो इंसान बैठा है उसको समझाना आना चाहिए तुमने किया क्या है। उसको ही पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने 2-3 हजार लाइंस का कोड लिखा है तो आपको सब कुछ ही आता हो, नहीं होता है। प्रोजेक्ट्स हमेशा सीखे जाते हैं एंड मतलब इंटरव्यू में इतना नहीं पूछा जाता क्या? नहीं नहीं, देखो मेजर प्रोजेक्ट से पूछ लेंगे आपको, पर ये नहीं पूछेंगे कि स्पेसिफिक ये कोड क्या कर रहा है। आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना आना चाहिए। आप वही चीजें बताओ जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो।
मान लो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट का, तो मैं बोलूंगा सर मैंने एसक्यूएल यूज किया है और एसक्यूएल से लॉजिक बनाया है बैक एंड से इसमें जावा में। तो बंदा एसक्यूएल पे ही तो क्वेश्चन करेगा अगर मैं उसको एसक्यूएल की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये आपके ऊपर है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ पे लेके जाना है आपको इंटरव्यू। अच्छा, मतलब एक कोड एक्सप्लेन करने के लिए अगर नहीं बोलेंगे। कोड खोलो स्क्रीन पे उसको एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं होता। जो आप अच्छा। बताओगे उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है वो, अपने तरफ से ओके। क्वेश्चन नहीं बनाता। तो जो आप बताओगे उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है सिर्फ, वो बस ये मेक श्योर करता है जो आप बता रहे हो आपको कम से कम वो पता हो। ठीक है। हेलो सर। हेलो, हाँ सर आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। सर वो पूछना ये है कि सर जैसे हम इस ग्रुप में सर लगभग 30 बंदे हैं। तो हम्म। सब अपने रिज्यूमे में सर आप जो प्रोजेक्ट्स कराओगे वो एज इट इज लिखेंगे या फिर इसमें कुछ वेरिएशन भी रहेगा? नहीं, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दूंगा प्रोजेक्ट्स का, तो आपके जो प्रोजेक्ट के रिव्यू होंगे वो मैं ही करूंगा, सबके प्रोजेक्ट्स का कोड का रिव्यू भी करूंगा इसके बाद में। तो एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो चिंता मत करना, आप अपना काम करो। वी विल मेक श्योर आपके प्रोजेक्ट्स जो हम यहाँ पे करा रहे हैं 3-4 वो सारे रेज्यूमे में डालें, अच्छी डिस्क्रिप्शन से डालें और वो ठीक हो। गिटहब पे भी अपलोड कराएंगे आपके प्रोजेक्ट्स, एंड गिटहब लिंक्स को मैं ही चेक करूंगा आपकी। यस सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो सर होल क्यूज या हेलो हेलो। सर, इसको प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करवाएंगे क्या सर आप? डिप्लॉय नहीं यार, माइनर प्रोजेक्ट है, इसको डिप्लॉयमेंट मेजर प्रोजेक्ट में करेंगे ना सारी चीजें। सर क्योंकि हम लोग का जो रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन था उसमें मतलब उन्होंने बताया था कि अच्छा अच्छा, डिप्लॉय से डिप्लॉय आपका मतलब है कि गिटहब पे डलवाएंगे। मतलब उन्होंने कहा था कि एक लिंक देना होगा कि जहाँ से मतलब इंटरव्यूअर उसको क्लिक करके आपका जो डिप्लॉयड प्रोजेक्ट है उसको हाँ देख तो सके। फिर वो गिटहब लिंक ही होता है। वो क्या होता है गिटहब लिंक में, क्या होता है रन करके वो गिटहब लिंक जैसे जब चल जाते हैं ना उसको लिंक को डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट के सामने उसका लिंक डाल सकते हैं, उसको वो क्या करते हैं हाईलाइट करके, जैसे कि उस पर क्लिक करें तो सीधा वो खुल जाए। मैं समझ गया आपकी बात, वो करवा देंगे, सब करा देंगे। नहीं मतलब वो गिटहब कोड तो अलग चीज है, उसका नहीं नहीं, लिंक तो मैं देख। आपकी बात भी समझ गया कि प्रोजेक्ट के नाम पे क्लिक करके प्रोजेक्ट रन हो जाता है, समझ गया मैं आपकी बात। हाँ। हाँ वो भी करा देंगे, उनके लिए उसके अलग सेशंस होंगे आपके रेज्यूमे के लिए अलग से। अच्छा ठीक हेलो है। हेलो। हेलो, हाँ मतलब जो हम लोग का मेजर प्रोजेक्ट वो भी स्विंग पे ही है। हाँ मतलब अभी जो है ना स्विंग के 3-4 प्रोजेक्ट करा देंगे आपको, फिर मान पे 5-6 प्रोजेक्ट बनेंगे अच्छे अच्छे, तो अपने पास वेराइटी होगी ना कि हम लोग डाटा क्या स्ट्रक्चर्स पे इंटरव्यू भी। तो बता रहे मतलब कंपनी वगैरह के लिए तो जो होगा वो तो उसके हाँ पहले ही हो जाएगा, मतलब मंथ से पहले, क्योंकि वो तो हम लोग का लास्ट में होता है एकदम। नहीं नहीं, पर मान में क्या होता है कि मान के प्रोजेक्ट सब बना लेते हैं, मान के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जावा पे। हमने डाटा स्ट्रक्चर्स किए हैं, तो अगर हम प्रोजेक्ट्स भी देंगे जावा पे तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन आता है ना कि हमने जावा पे डाटा स्ट्रक्चर किया है, उस पर प्रोजेक्ट भी किया है। क्योंकि ज्यादातर क्या होगा मन पे कर रहे होंगे, हाँ वो तो एक तो है, प्लस बट पॉइंट है। नहीं इसमें कुछ ऑर्डर भी होता है क्या? मतलब जो मेरा कॉलेज था, तो मेरा कॉलेज के टाइम वो 3 साल हो गए। मेरे कॉलेज के टाइम पे हम्म हम 4 लोगों ने बनाया था। तो उसमें जितने भी हम्म कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, हैश मैप हम्म ट्री मैप पूरा हम्म करके एक स्टोर होता है। तो स्टोर में हम लोग क्या होता है, ग्रोसरी के जो सामान होते थे उसकी लिस्ट हम लोग ने हाँ बना दी, 25-30 सामान हम्म लिमिटेड थे। हम्म तो उसमें हम लोग पूरा जो एक ग्रोसरी सिस्टम होता है ना प्रॉपर, हम्म हम्म। उसके हिसाब से उसमें पीडीएफ की बिल भी जनरेट कर देते। हाँ हाँ, तो तो ऐसा हुआ क्या पूरा कि पूरा ही हाँ, तो बनाएंगे हुआ पूरा। क्या कि वो मेरा तो गिटहब लिंक की वाला चला गया, कॉलेज के हम्म उससे था, तो हम्म मेरे को याद नहीं था। बट वैसा कुछ हम लोग ने बनाया था, हम्म। वो तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना फिर। हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वही बनाएंगे हम। वैसा ही होगा कि मतलब डायरेक्ट ये स्विंग वाला होगा। उसमें तो बहुत चीजें होंगी, हम तो बिल जनरेट करेंगे, मतलब 7-8 12-13 स्क्रीन बनेंगे अलग अलग, 12-13 के लॉजिक लिखा जाएगा। एसक्यूएल कनेक्ट होगी सब चीजों में, एंड एंट्रीज जाएंगी एसक्यूएल में, एसक्यूएल से एंट्रीज आएंगी अच्छा, बाहर। मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड, एक हाँ तरीके जिसे हम लोग मैनेजमेंट का बनाते हैं, हाँ वैसा ही होगा। हाँ ठीक 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 ठीक। बट प्रॉब्लम वही मतलब यही होता है ना, जैसे अभी हम लोग 17 बंदे हैं तो हम सबके प्रोजेक्ट सेम हो जाएंगे, जी। तो फिर वो नहीं नहीं, क्रॉस सबके क्वेश्चन सेम नहीं वगैरह। होंगे ना, सबके सेम नहीं होंगे ना, आप ग्रुप्स में डिवाइड है। अपने पास 12-13 मेजर प्रोजेक्ट्स है, तो एक 7-8 बच्चों के सेम हो सकते हैं ना। अब आप कॉलेज में भी हो, तो आपका ग्रुप है हम्म। जैसे कि 4 बंदों का, तो ब्लॉकचेन पे हाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे टाइम पे हमने क्या किया था, 12 बंदों ने ब्लॉकचेन पे काम किया, 3 प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन पे। तो देखो टेक्नोलॉजीज तो है ही, पर उसमें चेंजेस तो है ही ना। अब आप कितना ही स्कैटर कर लोगे मेजर प्रोजेक्ट्स में। नहीं, मैं सर्च तो कर रहा था, मतलब हम्म काफी ज्यादा उस पर की देख रहा था। पर मैंने हम्म कहा अगर दूसरों का रिज्यूमे भी देखा तो मैंने कहा हम्म। वही कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हर बंदे के दूसरे के सेम हो हाँ ही जाते हैं।
तो इसके बेसिस पे तो मतलब अगर इंटरव्यूअर प्रोजेक्ट देखने इतनी लगे इतनी बड़ी वो तो नहीं है। अगर आपका डीएसए क्लियर है और आपको मतलब फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट आती है तो आप आराम से निकाल लोगे, इतना नहीं, कुछ नहीं क्योंकि पूछता। होता है ना कि मतलब कुछ नया करने का, कुछ नया करने में ना, नया क्या करें तो कंपनी में नहीं जाएंगे हम लोग, क्या एक्सपीरियंस पता हाँ चलेगा हाँ, CI/CD लाइन कैसे चल रही है, कैसे चीजें बन रही हैं। तो आइडियाज सीआई उनको भी सीडी आते हैं तो ऐसे तो नहीं आ हाँ, जाता। वो तो वो फ्रंट पाइपलाइंस, एंड बैक एंड कुबरनेटिस का वो तो अलग प्रॉपर, चीज वो है। तो मतलब हाँ, वो तो मैंने पढ़ा तब हाँ, मेरे को पता तो चला, जब सर्च वही करते गए बात तो है मेरे को पता आपके। चली वो चीज। हाँ, मैं वही कह रहा था, तो मतलब अपना ऐसे कोई अगर एकदम किसी से को नई आइडिया तो चीज आ नहीं एक्सप्लोर सकता करनी है कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को नई हाँ चीज एक्सप्लोर करनी है तो मैं तो कहूंगा बैक एंड थोड़ा एक्सप्लोर करो। बैक एंड अच्छा है, मतलब जॉब सिक्योरिटी सबसे अच्छी है, लाइक पे अच्छा है। बैक एंड डेवलपर मेरे को मतलब पर्सनली बहुत पसंद है, मैं भी बैक एंड में काम करता हूँ। तो अगर आपको करना है तो बैक एंड करो यार, नोड करो, एक्सप्रेस करो और माई एसक्यूएल करो यार, वो 2 महीने में बढ़िया हो जाएगी। लाइक देयर नोड, आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स आउट देयर। नोड मोस्टली, हाँ मतलब नोड में मैं हाँ तो जो समझ रहा था कि मोस्टली क्या होता है कि अगर आपको एपीआई बनानी आ गई और क्रेड उसमें लग गया तो इसका मतलब मोस्टली एपीआई में हम लोग एक डेटा ही तो भेजते हाँ, हो, फिर उस बैक एंड, डेटा को फ्रंट एंड हाँ में दिखाना होता है बस। बस 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 बैक एंड में एपीआई का काम है, कुछ नहीं। और बस देखो, मैं बताऊँ मैंने कर रखा है बैक एंड में काम। कुछ नहीं होता है, एक हफ्ते में 2 एपीआई बनाने होते हैं, इजी इजी, लॉग इन लॉग आउट की, लाइक पासवर्ड फेच करने की, टोकन्स लगाने होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, इतना मुश्किल नहीं होता। हम्म, सर तो ये हेलो। जो रिमोट हम्म। जॉब्स होते हैं सर, वो बेसिकली वो बैकएंड पे होते हैं या फ्रंट एंड पे देखो, होते हैं? रिमोट जॉब्स का सीन है कि थोड़ा अपना फ्रंट बैक एंड वालों को आसानी से मिल जाती है, बट लाइक बैक एंड थोड़ा ज्यादा डिमांड में लगता है मेरे को, क्योंकि फ्रंट एंड में क्या है, आप अच्छे इतनी जल्दी नहीं हो सकते। फ्रंट एंड अगर आप 2 महीने से पढ़ रहे हो तो आप चीजें सीख सकते हो, बट लाइक यू कैंट बी द बेस्ट इन 2-3 मंथ्स। बट लाइक इन बैक एंड अगर आपको एपीआई का लॉजिक समझ में आता है तो आप 4 महीने में यू कैन बी लाइक वेरी वेरी गुड डेवलपर। मतलब फ्रंट एंड के लिए चीजें नई नई होती हैं बहुत सारी, तो उसको सीखते रहना पड़ता है। फ्रंट एंड में क्या है कि सीएसएस में बहुत चीजें होती हैं, तुम नहीं कर पाओगे सारी कभी भी। रिमेम्बर, जावास्क्रिप्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होती है। तो थोड़ा मतलब फ्रंट एंड में थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रो करना, करते रहना पड़ता है साथ साथ। तो यू कैन नॉट बी अ मास्टर इन 2 मंथ्स और समथिंग। रिएक्ट भी चेंज होती है, रिएक्ट में बहुत ज्यादा नए नए वर्जन आते रहते हैं, हर साल आते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो थोड़ा फ्रंट एंड में अपना को आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। बैक एंड में क्या है, मैं एसक्यूएल अच्छे से कर लो, एसक्यूएल में चेंजेस तो होते नहीं इतने। एंड नोड एंड एक्सप्रेस तो सेम चीज है ही, जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा यूज भी नहीं होती उसमें, बट लाइक बेसिक्स आनी चाहिए, तो बैक एंड जल्दी हो जाता है। ओके। एंड बैक एंड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि तुम्हें क्लाउड भी आ जाता है बैक एंड में, क्लाउड सीख लो फिर उसके बाद। मुझे जब पूछना है ना सर, जैसे ये अगर हाँ, किसी बंदे का वो प्रेफरेंस, अगर आपका सर रिमोट जॉब्स हो तो सर उसके लिए मतलब वो बेस्ट क्या रहेगा, वो बैकएंड या फिर फ्रंट एंड के लिए रिमोट देखो जॉब्स अगर अगर? आपने कुछ भी नहीं कर रखा अभी डेव में, तो मैं तो कहूंगा पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट करना, क्योंकि बैक एंड सीखने के लिए फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए, बैक एंड में जावास्क्रिप्ट तो यूज होती है। तो फ्रंट एंड में पहले अपना पता क्या करो, एचटीएमएल सीएसएस तो आपका 1-2 दिन का ही है, 10-12 घंटे का कोर्स मिल जाएगा। कोई फ्री कोड कैंप पे पड़े होंगे, 2 कोर्स कर लो हम्म, फ्री कोड कैंप से, एंड प्रोजेक्ट्स बना लो फ्री कोड कैंप से। मतलब 2-3 दिन लगाओ एचटीएमएल सीएसएस में अच्छे से, प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे वहीं पे, एंड लाइक आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। फिर जावास्क्रिप्ट एक यूडेमी पे इंस्ट्रक्टर है मैक्सिमर करके, उसका 47 आवर्स का कोर्स है शायद से, 500 रुपये कुछ का होगा। आप पायरेट्स बेसिक कर लेना, फ्री में हो जाएगा। तो वो 55 घंटे कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, वो कर लो। इट्स लाइक बेस्ट थिंग आउट देयर। उसके बाद फ्री कोड कैंप पे तुम्हें दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जावास्क्रिप्ट, दुनिया भर के, वहां से इससे 5 से पायरेसी वाला क्या था वो, हाँ, मतलब एक पायरेट्स पे। पायरेट्स में एक पायरेट्स बे, वेबसाइट है। BAY? हाँ हाँ, BAYB। भाई अच्छा। सर। वहां से, हेलो, हाँ हाँ, फिर उसके बाद अगर तुमने वो जावास्क्रिप्ट कर लिया ना 60 घंटे का बेस्ट मतलब उसके बाद तुम मास्टर हो जावास्क्रिप्ट में। अपने प्रोजेक्ट्स करना इंपॉर्टेंट है, अपना फ्री कोड कैंप पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के दुनिया भर के मतलब आपको 100-200 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे वहीं वहीं से। टॉप 10 करो जो तुम्हें पसंद आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पे मास्टरी हो गई अपनी। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस रिएक्ट की भी सेम इंस्ट्रक्टर है थॉमस करके, मैक्सिमर करके, उसकी 60 घंटे की वीडियो है, उसमें उसने क्यूबरनेटिस वगैरह सब सिखा रखा है, अगर आपको सीखना है तो। उसमें अच्छा। अगर आपने वो कर लिया ना, फिर उसके बाद रिएक्ट पे प्रोजेक्ट अपने, काजी एक क्लेवर प्रोग्रामर करके, उसने 15-16 क्लोन्स बना रखे हैं, 8 क्लोन बना लो कोई भी वहां से, आपका पोर्टफोलियो होगा बहुत तगड़ा। गिटअप पे आपके होगा 30 प्रोजेक्ट फ्रंट एंड के, एंड लाइक आपकी बेसिक्स बहुत ज्यादा तगड़े क्लियर है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप कोई भी इंटरव्यू फेल नहीं कर पाओगे।
उसके बाद आपको सिर्फ एक बुक आती है रिएक्ट की इंटरव्यू की, रिएक्ट इंटरव्यू कुछ करके है, मैं ऑथर का नाम बताऊंगा। 2 महीने में फ्रंट एंड आराम से निकाल सकते हो, 10-12 LP, कोई बड़ी बात नहीं। क्या सर, उसका क्या कहाँ पे बताया आपने, यूडेमी? वो नाम बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। यूडेमी, अच्छा यूडेमी पे इंस्ट्रक्टर का नाम है मैक्सिमम करके है। आप अगर उसका लिख दोगे ना तो मैं वो जर्मन, देख लेंगे हम लोग उसको, मतलब अगर स्क्रीन पे अभी वैसे मैं लिख तुम्हें मैं अभी मैं आपको कॉपी पेस्ट करके देता हूँ ना, एक सेकंड रुक जाओ तुम। ये यूडेमी बहुत अच्छा अपना वो है, 500 रुपए में यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन मिलता है, कई इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं यूडेमी पे। क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, आराम से मिल जाएगी 2 महीने, मतलब अपना दिन के 2 घंटे भी लगाओगे 2 महीने में अच्छे हो जाओगे। 2-3 घंटे वीकेंड ज्यादा लगा दिया करो। ये हाँ, ये खुल गया, देखो ये भेज दिया उन्होंने, ये है श्वार्ज मूलर, मैक्सिमम श्वार्ज मूलर, या यही है। इसका जावास्क्रिप्ट का, लाइक रिएक्ट का एंड नोड का भी, तीनों का कोर्स बेस्ट है, मैंने पढ़ रखे हैं दोनों तीनों कोर्सेज के, एंड लाइक हैंड्स डाउन बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, ठीक है। इससे पढ़ो, प्रोजेक्ट्स अपने फ्री कोड कैंप से कितने ही बना लो, बहुत पढ़े हैं दुनिया भर के, ठीक है। अगर तुम्हें करने किसी को वेब डेव, तो ये बेस्ट बात है, कहीं इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसको फॉलो करो, बात खत्म। जावास्क्रिप्ट में होता क्या है ना, मतलब जब स्टार्टिंग में क्या वो बेसिक तो बताता है, तो बेसिक तो मोस्टली हर किसी के जावा की एक जैसे प्रोजेक्ट बनाता है तब समझ में आता है वहाँ यूज कैसे होना है, वरना वो तो हाँ, तो ऐसा लगता है बस प्रोजेक्ट्स भी बनाता ही बनेंगे जाता इसमें है। तो अच्छा, प्रोजेक्ट इसमें बहुत सारे, 50 घंटे में तो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा ये प्रोजेक्ट, आपको फ्री कोड में बहुत मिल जाएंगे, इसने ही बनवा रखे हैं 2 प्रोजेक्ट्स इसमें। अच्छा, ठीक। आप खोलो वैसे यूट्यूब, फ्री मोस्टली इस कोड कैंप जगह लिखो, भाई जावास्क्रिप्ट जावा, लिखो, हाँ। अरे मैं तो अभी बहुत उस सब पे कर रहा बहुत था, बहुत मतलब हाँ, मोबाइल पे मैं बहुत है वीडियो देख जावास्क्रिप्ट। रहा था। हम्म तो दिक्कत नहीं है, फ्रंट एंड करना है 2 महीने में करो जो। फिर तुम्हें वेबसाइट बता दूं, ग्लास डोर है, बाहर मतलब इसमें क्या करो, यूएस बेस्ड जॉब ढूंढो, फ्रंट एंड बैक एंड में यूएस बेस्ड जॉब रिमोट मिल जाती है, आजकल बहुत मिल रही है लोगों को। तो थोड़ा मतलब देखो, मैं तो 80% नहीं, 60% अपना पढ़ने का होता है, 40% ढूंढने का भी होता है। ढूंढने में भी राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। जब ढूंढने निकलो ना, तो ढूंढने में भी अपनी पूरी जान लगाओ, इतनी पढ़ाई में लगा रहे हो, 3-4 घंटे लिंक्डइन में बिताने पड़ते हैं। ग्लास डोर पे सभी साइट्स पे रजिस्टर करना पड़ता है, मॉन्स्टर है, एंड उसके अलावा 2-3 और हैं, अच्छी अच्छी साइट्स, सब पे रजिस्टर करो, मेल्स देखो, एंड लगे रहो, कोल्ड ईमेल्स करो, लिस्ट ऑफ कंपनीज निकाल लो जो फ्रंट एंड के लिए हायर करती हैं, यूएस बेस्ड मार्केट्स में लिस्ट आ जाती है, मेल्स निकालो, मेल्स करो, ठीक है। चलो फिर, जावास्क्रिप्ट भी इसी का देखना है, रिएक्ट भी इसी का देखना है, नाम देख लो। चलो फिर, आई एम ठीक ठीक लिविंग गाइस, ठीक है, मैं थोड़ा भूखा हूँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन बहुत गाइस, शुक्रिया सर, बहुत थैंक्स। सारा आपने नॉलेज दिया सर। थैंक यू गाइस। Thank you, sir.